Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 5 English textbook. We are going to start our lesson from unit 5, My Beloved Pakistan. SLOs of this lesson are: learn the geographical importance of Pakistan, learn the physical features of Pakistan, know the population division, population distribution and major products of Pakistan, learn the economy and major occupations of Pakistan, know the people and culture of Pakistan, identify that Pakistan is the 7th nuclear power of the world and a pioneer in nuclear technology among Muslim countries. Develop listening, speaking and reading skills. In previous lesson, we read about our beloved country Pakistan, some important information, when it got its freedom, where it's situated, about the area of the Pakistan, about the population, some major information about its area and our national language, dress, fruits and flower and the game and its neighbors, and about the economy, on which thing it depends, the agriculture. So we will continue this unit. Here, page number 36, we are going to start from here now. This paragraph. The military of Pakistan is considered one of the best armies of the world. It is highly trained and loyal to its country. The military is always ready to lay down their lives for their country. In addition to this, they are skilled, highly professional, and up to date with the new trends. New trends, नए तरीकों से, जदीद तरीकों से वाकिफ हैं. उनको, हमारी जो आर्मी है उनको क्या है, नए तरीकों की समझ है, जदीद तरीकों की. द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान इज कंसीडर्ड. पाकिस्तान की जो फौज है वो क्या है, कंसीडर्ड की जाती है, समझी जाती है बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड. ये हाईली ट्रेन है और अपने मुल्क के साथ बहुत वफादार है, लॉयल है. द मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री. और हमारी फौज जो है अपने मुल्क के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहती है, अपने मुल्क की भलाई के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए. और हमारी फौज क्या है, हाईली स्किल्ड है और प्रोफेशनल है. द न्यू ट्रेंड्स एंड technology of war, the military intelligence agency of Pakistan is considered as one of the top spy agency of the world. Spy जो जासूसी करते हैं. The nuclear program was launched in 1975. Pakistan conducted nuclear test in 1999 in response to the nuclear blast by India. Pakistan successfully launched its nuclear project and became the 7th nuclear power of the world. Further, it is pioneer in the nuclear technology among Muslim countries. पाकिस्तान जंग के जदीद तरीकों से वाकिफ है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो दूसरे मुल्कों की जासूसी करती है, दूसरे स्पाइस पे भी नज़र रखती है, वो क्या है, वन ऑफ द टॉप स्पाई एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. और द न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1975 में. पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, रिस्पॉन्स टू द न्यूक्लियर ब्लास्ट बाय इंडिया. इंडिया की तरफ से जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने 1998 में टेस्ट किया था और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था अपना प्रोजेक्ट और 7 न्यूक्लियर पावर बन गया था पूरी दुनिया में. इसके अलावा पाइनियर है. पाइनियर मतलब जो कोई चीज पहली दफा न्यू स्टार्ट करता है तो वो क्या होता है, उस चीज का पाइनियर होता है. द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान जो था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या था, पाइनियर था. मुस्लिम कंट्रीज में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया था. द लास्ट पैराग्राफ हियर, पाकिस्तान इज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. पाकिस्तानी कल्चर इज रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड. The people of my country are very simple, honest and hardworking. I love my country very much. I am proud to be a Pakistani. So, Pakistan is like a gift to us from Allah Almighty, and Pakistani culture is very respected around the world. People of the other countries very respect Pakistani people and Pakistan because the Pakistani people are simple, honest and hardworking. And I love my country and I'm proud to be a Pakistani. So आज के लेसन में हमने ये पढ़ा कि
पाकिस्तानी फ़ौज जो है हाईली स्किल्ड है, प्रोफेशनल है और अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। और पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है वो क्या है, वन ऑफ द टॉप स्पाई एजेंसी है पूरी दुनिया में। और न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया था 1975 में और टेस्ट भी किया 1998 में। किस चीज़ के रिस्पॉन्स में? जब इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और 7 न्यूक्लियर पावर बन गई पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान क्या है, पायनियर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान। पाकिस्तान जो है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफे की तरह है और पाकिस्तानी कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग क्या है, सिंपल हैं, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है। और हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए और पाकिस्तानी होने पे प्राउड होना चाहिए। पेज नंबर 37 here, meaning of the difficult words from the text here, you can find it. Let's move to the remaining question of the exercise. We have done these two in our previous lesson. So the question number 3 here, what are the neighboring countries of Pakistan? Yes, we have read this in our text of unit 5. You can find the answer of this question in that. The fourth one, what do you know about the military forces of Pakistan? You can also find the answer of this question from your text. Describe the physical features of Pakistan. Yes, physical features like how many square it is and the population, it is about it. So you can find it. It is in your text. The question 2 here, complete the sentences by filling in the spaces with suitable words. You have to fill these blanks with the information from your text. Pakistan came into being on, it's very easy. Yes, 14th August. The second one, Quaid-e-Azam is the what? Of Pakistan. Yes, founder of Pakistan. The third one, the national flower of Pakistan is, yes, it's very easy. It's in your task. Yes, jasmine. जिसको हम उर्दू में कहते हैं चंबेली। पेज नंबर 38. The fourth one, the country's economy depends on, yeah, it's very easy, agriculture. Find the suitable words for these two by yourself. Now let's move to the third one. Choose the correct option for these here. We have 4 options for each sentence. You have to choose the right one. So, in Pakistan successfully launched its nuclear project and became the 7th nuclear power of the world. When Pakistan launched its nuclear project? Just revise the text and you can find it. Yes, it's very easy, 1998. The second one, Pakistan is nuclear technology among the Muslim countries. Leader, competitor, follower, or pioneer? Yes, we have discussed this. The pioneer is the right option here. The third one, Pakistan has some of the highest peaks in the world. Like what? One is Nanga Parbat here and the other is Mount Everest. No, it is the highest peak in the world on the first number. And the second is which one? Mount Elbrus? No. Pankchaya? No, the K2 is the highest peak of the world, which is in Pakistan. I want you to choose the correct option for these two. Question 4 here, make sentences of the following words. You can find the meaning of these words from your dictionary and use them in your sentences. Let me do the one for you. Freedom here, Pakistan got its freedom on 15th August 1947. Why I capitalize this A here in August? Because it is proper noun. We also have to capitalize
the first letter of the proper noun in the Pakistan here too. The P is capital. So be careful with the punctuation too. This is your homework from Summer Pack, page number 32. You have to read this paragraph here. A simple paragraph, just give it a read and answer these questions. You can find the answer of this question from this paragraph. The fourth and the fifth too on the page number 33. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.